Hello students, good morning. As we know that the entire world is passing through very critical situation due to COVID-19. So it is essential for all of us have to stay at home, keep safe yourself. हम लोग 2 चैप्टर ग्रामर का अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग समाप्त किया है. द फर्स्ट चैप्टर इज सेंटेंस एंड द सेकेंड चैप्टर इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो आपने देखा कि सेंटेंस में हम लोगों ने सेंटेंस का 4 पार्ट पढ़ा. नंबर 1 था स्टेटमेंट, नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 3 imperative sentence, and number 4 exclamatory sentence. And through examples we can better estimate the sentence form, and at that time we can represent and analyze the sentence is related from which part of the sentence that would be interrogative sentence, statement, imperative or exclamatory. But definition is too essential because we can find very easily according to the definition. It's clear? Now the second point and second chapters is subject and predicate, and how we can recognize the part of subject in a sentence, and on the other hand how we can find out the predicate. This is very marvelous part because through that condition we shall understand the chapter clause. And in clause chapter we have to study different kinds of sentence that will be simple, compound and complex. Simple sentence, complex sentence, compound sentence, you will have to estimate, especially whenever you will be in the chapter, clause and phrase. So we have to understand what is clause firstly. So I mean to say the group of words that contains a subject and a predicate. That contains a subject and a predicate and is a part of the larger sentence is called a clause. It means we can tell clause is the part of any larger sentence. Just like we can tell a lot of examples, and through examples we have to understand that part of the sentence is taken from simple, compound and complex. So firstly we have to remember the definition of clause. I mean to say group of words that contains a subject, मतलब एक subject रहेगा and a predicate और एक predicate रहेगा and is a part of the larger sentence. एक larger sentence का एक हिस्सा होगा, part होगा, is called a clause.
क्लॉज को हिंदी में हम लोग उपवाक्य कहते हैं। अंडरस्टैंड? उपवाक्य कहते हैं। सो थ्रू एग्जाम्पल हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे समझेंगे, क्योंकि क्लॉज तो हमने समझ लिया। तो सिंपल सेंटेंस में जरा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। विष्णु वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। विष्णु वॉज afraid of dogs. Vishnu was afraid of dogs. This is simple sentence. This is simple sentence. Because in simple sentence only you will find one subject and one predicate. And before this chapter you have already studied the part of subject and the part of predicate in a sentence, and how we can find the subject part and a predicate part in any sentence. That kind of concept, that kind of criteria you have already got. So I mean to say, no any doubt in your brain whenever you are in clause chapter, and very simply we can tell this is a simple sentence. And always you will have to concentrate the sentence which is already attached with one verb is known as simple sentence. So simple sentence, one subject, one predicate, and we can look very easily. This is verb. This is not हेल्पिंग वर्ड, दिस इज वर्ड, मेन वर्ड। ओके, तो ये हुआ एक सब्जेक्ट और एक हुआ प्रेडिकेट। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि दिस इज सिंपल सेंटेंस, दिस इज सिंपल सेंटेंस। सो सिंपल सेंटेंस ऑलवेज, simple sentence has one subject and one predicate, and number 2 compound sentence। थोड़ा हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 compound sentence। through example this is simple sentence। This is simple sentence। Compound sentence में क्या होगा? 2 more simple sentence, 2 more simple sentence, 2 more simple sentence। 2 more simple sentence joined by conjunctions, simple sentences, and joined by the conjunctions like and, understand, and, but, or,
Okay, so etc. Many more the list of these kinds of conjunctions, and these kinds of conjunctions are known as coordinate conjunctions. Okay, this is known as coordinate conjunctions, and whenever the sentence, two simple sentences are attached with and, but, or, so, etc. is known to be compound sentence, just like I am writing examples, and through example we shall try to understand the sentence is in the form of compound sentence or not. So example, Vishnu saw a dog and he ran quickly. And he ran quickly. And he ran quickly. Very, very important to understand the part of the sentence and how many sentences is attached with conjunctions. In this example, we have to think about. So, the sentence is beginning here. Vishnu saw a dog. This is subject, this is verb, this is object. मतलब एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ आकर के समाप्त हो गया. अब दूसरा सेंटेंस, he ran quickly. ये दूसरा लिखा हुआ है कि he ran quickly. ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है. ये आपका एक सेंटेंस पूरा हुआ, मतलब सिंपल सेंटेंस. हमने अभी कहा था एक वर्ब कॉन्टेनिंग करेगा, और विष्णु सॉ अ डॉग, यहाँ भी वन वर्ब कॉन्टेनिंग है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस हुआ. ठीक है, और ये दोनों सिंपल सेंटेंस को एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया गया है, जिस कंजक्शन का नाम एंड है. जिस कंजक्शन का नाम क्या है? एंड है. तो जब कभी भी इस तरह से दो सिंपल सेंटेंस आपको जो है सो जुड़े हुए मिलेंगे, और पर्टिकुलरली किस चीज़ से? एंड से, बट से, और से, सो से, और बहुत सारे लिस्ट हैं. बट अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक्स हैव टू गेन द नॉलेज, दिस काइंड्स ऑफ कंजक्शंस इज यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंस, और ये सेंटेंस फिर क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा. तो टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस ज्वाइंड बाय कंजक्शन लाइक एंड, बट, और, so etc. is known as is said to be compound sentence. Okay, the sentence which contains one subject and one predicate is known as simple sentence. Understand? Okay, one subject and one predicate containing in simple sentence, in compound sentence. Two simple sentence is attached with conjunction and I mean to say it will be compound sentence. Very, very important things and have to focus on it and mark my point. हमारे बात को ध्यान से सोचिए, तो हमारे हिसाब से न सिंपल में प्रॉब्लम है, न कंपाउंड में प्रॉब्लम है. अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक बात तो पता है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है. अच्छा चीज़ तो हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये.
कि सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो आज के वीडियोज में मैं सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया, डेफिनेशन दिया, उसके बाद कितने क्लॉज इसमें रहेंगे, कितने सेंटेंस रहेंगे ये बताया, और सिंपल में कितने जो है सो क्लॉज रहेंगे ये बताया। ये दोनों मेन चीज़ है, डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को अगर हम याद रखेंगे, आई थिंक no any problem will create in front of us, especially in the topic of simple sentence and compound sentence. Okay, thanks.